أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullah. So starting by the name of Almighty Allah, आज हम अपना first section start करने वाले हैं, that is section 1, which is related to the core concepts of Kubernetes. ठीक है, and then we will be moving forward with some other sections जिसमें further हम बहुत सारी चीज़ें study करेंगे. So now let's focus on section 1 and let's see what we are going to study in section 1. सो फर्स्ट थिंग जो कि हम अपने सेक्शन 1 में स्टडी करेंगे दैट इज़ द क्लस्टर आर्किटेक्चर, राइट? सो व्हाट इज़ अ क्लस्टर आर्किटेक्चर? जिन्होंने भी पिछला कोर्स स्टडी किया है विच इज़ द क्यूबरनेटीज एप्लीकेशन डेवलपर कोर्स, तो उसमें हमने ये स्टडी किया था कि किस तरीके से आप क्यूबरनेटीज के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए यू कैन क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर योर एप्लीकेशंस, ठीक है? एंड देन उन एप्लीकेशंस को आप किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं अपने क्लस्टर में एंड अपने वर्कलोड्स को चला सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे क्यूबरनेटीज़ में और हम देखेंगे कि एक्चुअल में जब क्लस्टर क्रिएट होता है तो उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स that come close together and they gel in and they work together to achieve this functionality or property of cluster, right? So cluster architecture, acha, ab cluster architecture mein there will be some subtopics like what is actually a cluster architecture, what do we mean by this word, theek hai? Then we'll be talking about the CRI, which is actually container runtime environment, which is actually enhancement that Kubernetes has introduced in the recent versions, theek hai? Then we will talk about the container D and Docker, right? So these both are the container technologies, theek hai? And what's the difference between them? We will be talking about the HCD data store, which is actually there to store the statuses and all the configurations of your cluster, ठीक है? And then हम आगे बात करेंगे क्यूब API सर्वर के बारे में कि हम क्यूब API सर्वर को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं and how we are leveraging it and how it's helping us achieve our goals, ठीक है? And then what is actually a cube controller manager, right? So इसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे. Then cube scheduler, what is actually a cube scheduler? After that we will be talking about a kubelet and then we will be talking about kube proxy. So all these different microservices or micro functionalities come together and then you are able to create a cluster and then you are able to deploy your workloads inside a cluster, right? तो इनमें से अगर एक भी कंपोनेंट मिसिंग होगा यू वोंट बी एबल टू डिप्लॉय योर वर्कलोड्स बिकॉज योर क्लस्टर विल नॉट बी वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एंड वी विल सी how these things are integrated and how we can use these things for our own good, ठीक है? अच्छा, and secondly, in the same section, we will also be studying about the API primitives, which we actually already studied, जिसमें हमने pods के बारे में पढ़ा. But in this course, we will have some other example of pods creation. So we will kind of revise these topics in this course as well. तो इसमें से जो मेन components है जो कि quite widely use होते हैं हम उनको revise करेंगे, which includes the pods, right? And then it includes the replica sets, and then it also includes the deployments, right? And services that we were talking about, namespaces, and imperative versus declarative approach, जो हमने अपने पिछले कोर्स में भी स्टडी किया था कि हाउ यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स or you can create Kubernetes resources using imperative commands or with the help of a declarative approach where you define a manifest file with all the configurations that you need for your object or for your Kubernetes resource, right? So हम ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे. Now moving forward, this is, I think, okay, so moving forward we will also be talking about the services part as well, जिसमें हम थोड़ा सा सर्विसेज को भी डिफाइन करेंगे कि सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास. सो दीज आर all the highlights of this section which we will be studying. So I'm stopping this video here. I'll continue the video from the next lecture जिसमें हम अपने पहले core concept को start करेंगे. So I'll see you guys there.
grab a cup of coffee, and I'll see you guys there inshallah. Have a good day.